when the notification is about to come out or when the notification has already been released, तब सबसे पहला रिएक्शन स्टूडेंट्स का क्या होता है? पैनिक. आपका पैनिक मोड ऑन हो जाता है और आपका फोकस मोड ऑफ हो जाता है. एंड दिस ऑफन रिजल्ट्स इन प्रॉब्लम्स इन योर स्टडीज, इन प्रॉब्लम्स इन योर सक्सेस, इन प्रॉब्लम्स इन योर मेंटल स्टेबिलिटी एज वेल. आप चाहते हो कि जब मेरा नोटिफिकेशन आया है आई शुड बी एट माई बेस्ट, बट होता उल्टा है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? Now this happens because of multiple reasons, and if we are able to, and these are very simple reasons, and if you as students, as candidates are able to identify these reasons, then it's going to become super easy for you to keep your panic mode off and keep your focus mode on. आज मैं 3 बहुत छोटे-छोटे सिंपल ऐसे रीजंस के बारे में बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है, because I keep talking with a lot of students over the call every evening. So I am getting this feedback right now that a lot of students are getting into this panic mode even before the notification is out, because there's a strong perception, there's a strong idea कि notification आने वाला है, हमारी expectation बनी हुई है, and with that expectation you should be in your focus mode, but instead you get into your panic mode. सबसे पहला जो major reason है, which is a reason that is happening with everyone, is clutter in your mind. Not clutter of your studies, but clutter in your mind. And why does this happen? The question now is, why does this happen? But before that, let's try and understand what is the meaning of this clutter in mind. जब आप एक चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और you're trying to focus on one thing, but instead your mind is getting deviated towards another thing. मैं पढ़ तो रहा हूँ फाइनेंस, बट मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा. मैं पढ़ रहा हूँ मैनेजमेंट, बट मैं सोच रहा हूँ यार अभी तक करंट अफेयर्स भी नहीं हुआ है. मैं पढ़ रहा हूँ मैनेजमेंट, बट नाउ आई एम थिंकिंग वेदर आई शुड बी मेकिंग नोट्स और नॉट. इफ आई डोंट मेक नोट्स, हाउ विल आई रिवाइज ऑल ऑफ दिस? देयर आर लॉट ऑफ क्लटर, लॉट ऑफ चैटर व्हिच हैपेंस इन आवर माइंड. ये जो बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, अदर देन व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट, दिस फोर्सेस अस और बेसिकली टेक्स अस इनटू अनदर जोन, और हम जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू फोकस, नॉट एबल टू लर्न, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसको छोड़ के हमारा दिमाग सब कुछ कर रहा है, बट वो नहीं कर रहा है जो हम करने के लिए बैठे थे. नाउ दिस क्लटर इन द माइंड हैपन्स बिकॉज ऑफ वन मेजर रीजन, वन मेजर हैबिट जो हम लोगों ने पिछले 5 से 10 सालों में बना ली है. And this habit, which is everywhere around us, is called as multitasking. Now, multitasking is good for managers. Multitasking is good for MBA students. Multitasking is good for top management. But multitasking is not good for students. Multitasking is not good for teachers. Multitasking is not good for scientists who are involved in experimenting and focusing upon one thing at a time. तो आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका फोकस एरिया, आपका काम, व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट, दैट डिटरमाइंस वेदर मल्टीटास्किंग इज गुड और नॉट. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी वीडियोज हम देखते हैं जहाँ पे लोग बहुत बड़ाई करते हैं. दे टॉक अबाउट मल्टीटास्किंग एंड देन दे ट्राई एंड ब्रिंग अबाउट इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स. And it has become so deeply ingrained in our mind that we think that multitasking is always good. Or even if we have not, we are so much multitasking every day in our life that we've got used to living like this. आप सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसके साथ टीवी देख रहे हो. ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. ट्रैवल कर रहे हो, उसके साथ अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हो. इंस्टाग्राम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते हर 5 मिनट में यूर ओपनिंग अप योर इंस्टाग्राम अकाउंट, or you're opening up your Telegram account. You're doing all sorts of multitasking subconsciously and you're not even realizing it. This multitasking creates clutter in your mind because आपके दिमाग को आदत लग गई एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचने की. While you're doing one thing, you're constantly thinking about something else because your brain has got used to it. Now, undoing this, it's going to take some time. It will not happen in a day. कि मल्टीटास्किंग की हैबिट, यू क्रिएटेड दिस हैबिट ओवर ईयर्स. तो रिमूवल ऑफ दिस, इफ नॉट ईयर्स, इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 10-15 days. बट बिलीव मी,
in 10-15 days you will start seeing the difference in your focus, in your panic mode and all those things. Okay, automatically तुम्हें feel होगा you're more calm, you're more focused, you're able to figure out what is good for you for the examination, what is bad for you. You're able to remember a lot more things than you were able to remember before. Remembering, recalling, वो सब better होने लगेगा when you are able to focus on one thing at a time. So this is one major reason behind panic mode on and focus mode off. तो लिख लीजिए, लिखना चाहते हो और इसका फॉलो करना शुरू कर दीजिए. सेकेंड रीजन पे आते हैं. सेकेंड रीजन इज कंपैरिजन. नाउ इट इज only human to compare yourself with others and there is nothing wrong with comparison, but comparing at a time when it is the most harmful automatically gives you the most harmful or most deadly results. सबसे ज्यादा खतरनाक, the most harmful time when you could compare is before the examination, when you need to not compare at all, when you need to be completely focused on yourself. At that time you start comparing with others. अपने आप से पूछो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, टेस्ट लिखोगे, टेस्ट लिखते ही सबसे पहले देखोगे मेरी रैंक कितनी है, मेरा स्कोर अदर्स के कंपैरिजन में हाउ मच इज माय स्कोर. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस कंपैरिजन इज that you're able to compare with probably 100 students and you either feel good about it or you feel bad about it. But in the final exam, you're not comparing with only these 100 students. You're comparing with tens of thousands of other students as well. Therefore, this sample is anyways going to fail. Your comparison with these 100 students is anyways going to fail. It's not going to work out. It's not going to give you anything positive. क्योंकि आपका जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है वहां पर सैंपल बहुत बड़ा है, वहां पर जो पूरे स्टूडेंट्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है. Therefore, comparison is good 1 year before the exam when you're preparing, when you're practicing. जैसे हम स्पोर्ट्स में करते हैं, we compare with our peers, we try and stay at the top. जो टॉप पे होते हैं वो नेशनल से इंटरनेशनल पे जा पाते हैं. At that point it is good, but 1 month before the exam, when your international sport or your final exam is just around the corner, at that time when you start comparing, it breeds anxiety. It breeds anxiety and it does not allow you to improve. वो आपको रियलिटी चेक इतना खतरनाक दे देता है कि आप improve नहीं कर पाते हो. At that point, what is the solution out of this now? The solution is not to compare with others, but to compare with yourself. Now, आपको लगेगा सर आपने तो ज्ञान दे दिया, you compare with yourself, you do not compare with others, but how do we do it? What does it even mean? Comparing with yourself simply means बहुत आसान है, focus on excellence. When you're comparing with yourself, you're simply focusing on excellence, you're not focusing on anything else. I'll give you an example. Finance and management में average score in phase 2 is 35 in objective and about 35 in descriptive. यहीं 70% पे लाई करता है. Phase 1 की बात करें, the average score in general awareness out of 80 is 40. तो अगर आपका 40 प्लस आ रहा है, that means you are above average. 40 से नीचे है, that means you are below average. Excellent students, students who are able to perform very well in the past, who have done very well, who have scored very high, ranks आई हैं जिनकी, they're able to get to 55-60 also in general awareness. तो आपका एक्सीलेंट स्कोर क्या हो गया? लेट्स से 55 मेरा एक्सीलेंट स्कोर हो गया. एवरेज स्कोर मेरा हो गया 40 और बैड स्कोर मेरा हो गया लेट्स से 30 एंड बिलो. अब मुझे पता लग गया कि यार मुझे कितना स्कोर करना है इन ऑर्डर टू अचीव एक्सीलेंस. आई हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राई एंड टारगेट 55. हो सकता है द टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज टेकन द टेस्ट हैज अचीव्ड 40. तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि यार मेरे भी 40 आए हैं, सबके 40 आए हैं, या टॉप स्टूडेंट्स के 40 आए हैं. दैट मीन्स एक्सीलेंट स्कोर इन दिस टेस्ट वाज 55, बट दैट माइट नॉट बी द केस. हो सकता है वो गलत हो. क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल साइज ही बहुत छोटा है. 100 स्टूडेंट्स का सैंपल साइज लेके बैठे हो आप, 100, 1000, व्हाटएवर इट इज. एक्चुअल एग्जाम में और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एक्चुअल में 55 का स्कोर अचीव करेंगे इतने डिफिकल्ट टेस्ट में. Therefore, it becomes very important that your excellent score or your benchmark for excellence does not change. ये चेंज नहीं होना चाहिए.
आपने बना लिया प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर स्कोर्स के बेसिस पे. नाउ दिस कांट चेंज. पेपर सिंपल आ गया और आपके 60 आ गए तो आप खुश हो सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. बी हैप्पी. एक्सपेक्ट और assume that you are excellent in that test. There's nothing wrong with that. अपने आप को reward दो. But when the test is difficult at that point also, your excellent score will not change. It has to stay there only. So what have we done? Instead of trying to compare with others out there कि औरों के कितने आ रहे हैं, मैंने सिंपल अपने से कंपेयर करना शुरू कर दिया. अपने आप को मैं एक्सेलेंस पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम डूइंग दैट. So as soon as you remove comparison from your dictionary, as soon as you move from comparison to excellence in your own dictionary, automatically a lot of anxiety will go out of the window. Lot of this uh, fear of not clearing the examination will go out of the window automatically, and you will see the change in 2-3 days only. Your mind would want to take you again back to comparison. वो चाहेगा कि आप जो पुराने तरीके से सोचते आ रहे थे वहीं से सोचो, बिकॉज इट इज कंफर्टेबल फॉर योर माइंड. बट यू डोंट हैव टू अलाउ इट टू गो देयर. आपको ट्राई करना है कि वो उधर ना जाए. So this is the second way on how you can switch off your panic mode and switch on your focus mode. The first was clutter. The second is the habit of comparison. Let's now come to the third one, and this is, in fact, I would say the most important one. अब देखो रियलिटी क्या है. रियलिटी ये है कि हमें एग्जाम से 10 महीने 12 महीने पहले तैयारी शुरू करनी थी. वी हैड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक दिस which has a lot of syllabus 6 months, 10 months, 12 months before the examination. That is the reality. That is something that we should have done. That was an ideal amount of time. हमने वो नहीं दिया. We did not do that. What have we done instead? We kept waiting for the notification. We kept giving ourselves reasons, or in some cases, a lot of students kept preparing for other exams as well. And then, when the notification is out, we have about 60 days left for the exam, or even if the notification is not out, we have about 60-70 days left for the exam. That is the expectation. अब हम expect कर रहे हैं खुद से. We are expecting from ourselves कि हम इन 60 days में वो सब पढ़ लें जो एक स्टूडेंट 10 मंथ्स ले लें. 13 to 10 300 days. जो एक स्टूडेंट ने 300 दिन में पढ़ा है, वो हम सब सेम कंटेंट, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम 60 डेज में कवर कर ले. नाउ इज दैट पॉसिबल? यू ओनली टेल मी, इज दैट पॉसिबल? आवर एक्सपेक्टेशन हियर इज अनरियलिस्टिक, एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विल रिजल्ट इन अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स ओनली. Unrealistic expectations will give you unrealistic results, and those results will be failure, not a lot of success, but a lot of failure. Therefore, expecting out of you that in these 60 days you're going to be able to cover the entire syllabus that another student has dedicated 300 days on is very unrealistic. It's not going to work out. What is realistic? What is it that I'm trying to say, and what is now realistic? I'm trying to say that do not try to cover everything. ये ट्राई ही मत करो कि मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है. ओके, अब ये ट्राई नहीं करना है तो क्या ट्राई करना है? ट्राई ये करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, what according to past year papers are the most important topics that have been recently regular that have been repeated and asked for examination. So basically I am asking you to be more smart, because you do not have the time to be laborious. There are two kinds of students here. ये laborious student है जिसने बहुत मेहनत की, 300 दिन तक सब कुछ सारा सिलेबस कवर किया, and he is relying on this ability to cover the entire syllabus by dedicating 300 days that he will now clear the exam. You are required to be smart, because laboriousness will not work in 60 days. Laboriousness requires 300 days. Dedicated study of the entire syllabus, all the current affairs requires 300 days. आप 60 days में 1/5 time में नहीं कर सकते. You are required to be smart. Smart doesn't mean that you take shortcuts. Smart means
You focus on what is most important for the examination. Let me give you an example. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मेरे पास थोड़े दिन स्पॉटलाइट में कवर कर रहा हूं और उसमें स्पॉटलाइट की वीडियोस नहीं मिल रही हैं, आप प्लीज स्पॉटलाइट की वीडियोस डलवा दीजिए। मैं बोला आप ओके, आई टोल्ड हिम लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। भाई एक बात बताओ, आरबीआई 247 पढ़ लिया, पीआईबी 247 पढ़ लिया, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लिया? उसने बोला नहीं सर ये सब नहीं पढ़ा, बट आई एम फोकसिंग ओनली ऑन फेज 1, तो मैं ना बस स्पॉटलाइट कवर करना चाह रहा हूं अभी। मैंने उसको फिर पूछा, अच्छा फेज 1 की बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया, देख लिया प्रीवियस ईयर पेपर में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं सर, आपने कहीं पे बोला था स्पॉटलाइट इज फॉर फेज 1, तो मैं ना स्पॉटलाइट पे फोकस कर रहा हूं। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ट्राइंग टू बी लेबोरियस एट अ मोमेंट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू बी स्मार्ट। पिछले 2 साल आपने प्रीवियस ईयर तो आपको पता होता कि आरबीआई 247 और पीआईबी 247 इनका वेटेज मैक्सिमम हो चुका है जर्नल में फेज 1 में भी। तो इन फेज 1 there are 80 questions in general awareness. Out of that, more than 50 questions are coming from RBI 247, PIB 247 and government schemes. Only about 30 questions, not even that, are coming from Spotlight. Now, if that is happening, do you want to cover 30 marks first or you want to cover 50 marks first? And the story doesn't end here. Phase 2 में भी यहाँ से question आएंगे. Phase 2 में यहाँ से कोई सवाल नहीं आने वाला है. So I told him, बच्चा, 50 questions are going to come from here in phase 1. A lot of questions are also going to come from here in phase 2, जहाँ से आपकी रैंक बनेगी, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन वो भी सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं. You should be covering it close to the examination. जब एग्जामिनेशन 30 दिन 35 दिन 40 दिन दूर हो तब इसको पढ़ लीजिए. अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो ये पढ़ने में कोई there is no harm in doing that. But you've still not read all of this. When you've still not done the more important part, why are you doing the less important part? अब less important part पहले करोगे तो रिजल्ट भी less important ही दिखेगा फिर तुम्हारा. So this is an unsmart strategy, a laborious strategy, but the environment, the time requires you to follow a smarter strategy. I keep repeating these things कि smart में क्या क्या आएगा, but I'm repeating it again because I know that the difference is not yet clear. अब आपके पास 60 दिन है, आपके पास 300 दिन नहीं है that you can follow a laborious strategy where you can have the luxury of covering less important things because you know सब कुछ तो मुझे cover करना ही है. Here you do not have enough time. You might not be able to cover RBI and PIB 247 if you end up spending a lot of time on Spotlight. हो सकता है ऐसा हो जाए, सोचा तो था मैंने 4 दिन में खत्म कर दूंगा, 4 दिन की जगह 10 दिन लग गए. And now I do not have enough time to cover RBI and PIB 247. Attempt wasted. That is the outcome. तो ये 3 चीजें थी जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखो. Number 1, focus upon not comparing yourself with the others. Number 2, clutter. अपने दिमाग का clutter खत्म करो. Multitasking को अपनी घर से बाहर फेंको. Throw it out of your house. Throw it out of your mind. Throw it out of your body. Just focus on doing one thing at one time. Number 3, get smart. Make sure that you're creating a smarter strategy for yourself because you know that you cannot in any situation have a laborious strategy, cover the entire syllabus and then clear the exam. You don't have enough time anymore. Therefore, at this point of time, try and create more smart strategy. Keeping this in mind only, I'm teaching this to all the students right now. We've started with schemes and reports. हम लोग टेस्ट ले रहे हैं अभी स्कीम्स और रिपोर्ट्स की, और ये अगले 1-1.5 महीना चलेगा. Why? Because I know that it is smarter to cover schemes and reports at this point. It's going to help you in phase 1 as well as in phase 2. Therefore, why run after the syllabus, run after Spotlight, run after things that are not that important anymore for students at this point of time. ठीक है? So that is all from my side. I'm very sure कि मैंने जो एक comparison किया है, how to reverse this, how to switch off your panic mode and switch on your focus mode, where in reality your panic mode is on and your focus mode is off. How to do that?
I've discussed it. I'm very sure a lot of students out of the students watching this will be able to understand it, use it, apply it in their lives. Okay. If you have any doubts, any questions, pen it down in the comment section below. I will try and answer as many as possible. All the best. Keep studying hard. The exam is coming near. Bye bye. Jai Hind.